Matters raised with permission. Sri Jhala Kesri Dev Singh ji. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to speak today, sir. Sir, under the guidance and the leadership of the Honorable Prime Minister, the tourism sector has become a vibrant sector of our economy. The multiplier effects of this sector make it an important part of our economy. The government's push for greater connectivity as well as the improvements in the hospitality sector is attracting more foreign tourist arrivals into our country. As per the Bureau of Immigration, sir, India received 6.19 million FTAs during 2022 as compared to 1.52 million FTAs during 2021. Similarly, the foreign exchange earnings from tourism in US dollars during the month of February 2023 were 2.23 billion US dollars as compared to 0.571 billion dollars during the month of February in 2022. The foreigners who bring this inflow into our exchequer travel to India for various tourism reasons. Leisure tourism is amongst the most important, but the business purposes, health tourism, education tourism are also fundamental. Not to forget the large NRI diaspora who visit India regularly. But sir, upon their arrival, these foreign tourists are required to manually fill up a disembarkation form, which not only consumes a lot of time, but takes a toll on already fatigued passengers and also adds unnecessary paperwork on immigration officials. Our government, sir, through its pro-people and tech-savvy approaches, has brought a paradigm shift in the service delivery mechanisms in the country. Be it direct benefit transfer or even Digi Yatra, efforts are being made to leverage the use of technology with the mantra of minimum government, maximum governance. Today, with the digital technology, passports and visa documentations have become far more efficient, because of which this disembarkation card has become redundant. Most of other developed countries do not have this system, and even we as Indians, when we go abroad, are not expected to fill this form up. Sir, therefore, I, through you, subject to security reasons, request the government to discontinue this manual practice and provide such foreign travelers a paper-free and hassle-free travel experience into our airports. It will help us treat our guests under the mantra of Atiti Devo Bhava. Thank you. Thank you. Manisri S. Silvagan Vethi, demand to make knowledge of local language as primary criteria for recruitment of teachers and doctors in Puducherry. Honorable Chairman, sir, the new education policy brings out a new era in the Indian education system. Even our harshest critics are welcoming at least two important features of the policy. One is the primary education through mother tongue, and other is the extension of mother tongue as medium of instruction in the professional courses. But the current scenario prevailing in several states is not conducive to achieve the target. Many state governments like Puducherry have long back introduced the CBSE pattern of education from the primary level in English medium. Now they are unable to switch over to Tamil medium as there are no textbooks of CBSE standard in regional languages. This defeats the very purpose of new education policy. Therefore, the central government should step in, advise and help the state administrations suitably so that the medium of instruction at the primary level will be only in the regional language. Several governments have already initiated steps to write textbooks in the regional languages for medicine and engineering. Perhaps in a year or two, they will be fully prepared for the changeover. Puducherry has Tamil, Telugu and Malayalam speaking regions. It can easily adopt the textbooks prepared by the neighboring states. But attention has to be paid on the recruitment of teachers. Being an union territory, the recruitment of principal of higher secondary schools and college lecturers being done by UPSC. Candidates from other states are getting recruited, but they are not well versed to teach in regional language. As the principals of the higher secondary schools have to deal with the school students due to the regional language problem, conducive atmosphere for teaching and learning process are not prevailing.
Therefore, there must be a provision in the recruitment rules for ensuring those who are conversant in the regional language are all alone be selected. Another field that requires local language is medicine. Unfortunately, in unity like Puducherry, where the recruitment of doctors, nurses is done by UPSC, most of the recruits do not know the local language. When the doctors or supporting staff are not conversant with the local language, it is very difficult to understand the sufferings of the patients and offering treatment and healthcare advice. Therefore, I request through you, sir, that UGC, ASCTE and other higher education bodies to include a specific class in the recruitment rules that the knowledge of local language is an important criteria for selection with immediate effect. Thank you very much, sir. Thank you. Mani Sri Niranjan Vishi demand to establish Kendriya Vidyalaya in Patangarh, Titlagarh and other districts of Odisha. Thank you, Honorable Chairman, Deputy Chairman, sir. I bring to your attention regarding establishment of Kendriya Vidyalaya in Patnagarh and various districts of Odisha that the Deputy Commissioner of Kendriya Vidyalaya Sangathan Region Office Bhubaneswar had submitted a revised suitability report of land and temporary accommodation building for the proposed Kendriya Vidyalaya in Patnagarh. The district administration has arranged 10 acres of land and temporary accommodation at Patnagarh for Kendriya Vidyalaya. However, despite meeting prerequisites since January 2022, there has been no further action by the Government of India towards establishment of new Kendriya Vidyalaya at Patnagarh and Titlagarh of Balangir district. In addition to that, there are pending proposals for new Kendriya Vidyalaya under the jurisdiction of the Kendriya Vidyalaya Sangathan Bhubaneswar region, namely Titlagarh, Patnagarh, Talcher, Atmallik, Khurda, Kuchinda, Sambalpur, Dhenkanal, Jaipur. It is crucial to expedite this process swiftly to ensure the timely establishment of Kendriya Vidyalaya. The underprivileged areas, particularly Patnagarh, Titlagarh and other districts, as mentioned above, urgently require quality education support through a Kendriya Vidyalaya. This will benefit the children of central government employees and including railway, postal, bank, insurance employees, FCI, BSNL employees and those under central and Odisha government employment. I appeal for your intervention to direct Kendriya Vidyalaya Sangathan authorities to expedite pending process swiftly, ensuring the establishment of Kendriya Vidyalaya at Patnagarh, Titlagarh and other places as mentioned above. This initiative aligns with our commitment to providing quality education in underdeveloped regions, fulfilling the educational needs of the student from central and state government employees. Thank you. Thank you. Manya Srimati Sulata Dev, concern over cruelty against animals in India. जय जगन्नाथ। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, मुझे 0 आवर में एक सेंसिटिव टॉपिक पे बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इंसान के लिए और कितने स्कीम के लिए सभी को बोलते हैं। मैं आज एक ऐसी टॉपिक ली हूँ जो मासूम जानवर के लिए बोलना चाहती हूँ। बस एक बात है, महात्मा गांधी बोले थे, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। मासूम जानवर हम देखे हैं, इंसान और जानवर साथ में रहते हैं। भगवान भी जानवर को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि जानवर का कोई प्रजाति लुप्त ना हो जाए, सारे भगवान पशु पक्षी का वाहन लेके चलते हैं। मगर हम क्या करते हैं इंसान? आज जो मैं क्रूएलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, पशु क्रूरता के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहूँगी, इस संसद के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो धारा आर्टिकल 377 है उसको
कड़ी से कड़ी किया जाए, और जो बीएनएस में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है कम से कम बीएनएस में उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखते हैं पशु के ऊपर किस तरह से क्रूरता होती है, पशु के ऊपर लैंगिक अत्याचार होती है। कभी देखा गया है नोएडा में भी एक कुत्ते को तीसरी मंजिल से प्रेग्नेंट कुत्ते को भी फेंका गया, और पशुओं को भी जीने का हक है। हमारे ये जो अर्थ है ये सबके लिए बना हुआ है। मैं फिर से एक बात बोलूँगी कि जो लोग एक्टिविस्ट काम करते हैं पशुओं के लिए, उनके ऊपर में भी अत्याचार होता है, उनको भी देखना चाहिए। जो स्लटर्स हाउसेस है जो अनऑथराइज्ड है उनके ऊपर कार्यानुष्ठान होकर उनको बंद करना चाहिए, और जो एक्टिविस्ट के ऊपर जैसे क्रूरता के अगेंस्ट में जो काम करते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सरकार एक टैक्स फोर्स गठन करे, जो टैक्स फोर्स है वो कहीं पर पशु क्रूरता हो रहा है तो फिर उनको पकड़े और उनको अच्छे से अच्छे जैसे पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट तो है मगर वो बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि पुराना होने के कारण कहीं पशुओं के ऊपर क्रूरता होता है और मानसिकता क्या होता है 50 रुपया 100 रुपया दो और वो फिर छूट जाओ। वो एक्ट भी चेंज होना चाहिए, कड़ी से कड़ी ये होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, तो हम अपने पशुओं को संभाल के रख सकें। आजकल ना क्या होता है पशुओं के मानसिकता बदल गई है, वो अपने आप में फ्रेंडशिप में जी रहे हैं, मगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं पशु प्रवृत्ति ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। हम पशुओं को इतना क्रूरता के साथ बिहेव करते जो नहीं करना चाहिए। मैं देखी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी पशुओं को और पक्षियों को दाना देते हैं, उनको भी प्यार करते हैं। मैं ये अनुरोध करूंगी प्रधानमंत्री से। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, डिमांड टू मेक लॉज टू प्रिवेंट डिस्कॉर्ड अमंग एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ऐसे गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में वहाँ की आस्था और विश्वास, ईश्वर के प्रति जो उनके मन में आस्था है, उसका अपमान करने, उसकी आलोचना करने, उनके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कड़ी सजा का प्राविधान है। मान्यवर, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में, जहाँ लगभग 125 करोड़ आबादी एक वर्ग के हिंदू समाज की है, और हिंदू समाज उदारवादी और सहिष्णु माना जाता है, और इसी को लेकर इसकी एक विशेषता। लेकिन आज धीरे धीरे ये हमारा उदारवादी सोच और हमारी सहिष्णुता हमारी कमजोरी बन गई। जब कोई भी चाहे किसी भी तरह के अपमानजनक टिप्पणी हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर, हमारे धार्मिक प्रतीकों पर कर सकता है, और उसके लिए उसके कोई कार्रवाई नहीं होती। मानवर, ऐसे तमाम सारे देश हैं जहां इस निंदा को लेकर के फांसी तक की सजा है, मृत्युदंड तक का प्राविधान है। लेकिन हमारे जैसे देश में हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, और हमारा धर्म ये शिक्षा देता है सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर हो, उनका हम सम्मान करें। लेकिन लगातार दूसरे धर्मावलंबी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की गंदी टिप्पणियां करके, हमारे अपमानजनक टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, एक गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार ये मांग उठी है कि यहाँ पर भी इस निंदा कानून बनाया जाए। माननीय, इसलिए इस निंदा कानून की आवश्यकता पड़ी कि आज धीरे धीरे अगर देखा जाए कि जब कोई कुछ भी बात होती है हमारे देवी देवताओं को अपमान करने के लिए, उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने में कोई संकोच नहीं करता और मुस्कराता हुआ चला जाता, क्योंकि हमारे कानून में उसके लिए कोई समुचित दंड का प्राविधान नहीं। इसलिए वो स्वतंत्रता पूर्वक चाहे हमारे देवी देवताओं की चाहे जिस तरीके की टिप्पणियां करें, चाहे जैसे लेख लिखें, चाहे जैसे चित्र बनाएं, और जैसे वो अपमानित करें। तो मान्यवर, मैं इस सदन, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन है, वरिष्ठ सदन है, और इस पर मैं चाहूँगा इस गंभीर विषय पर कि आखिर कहीं न कहीं हम सब की भावनाओं को भी चोट पहुँचती है। एक घटना राजस्थान में हुई, जरा सी एक पार्टी की एक एक्टिविस्ट के उसके पीछे पड़ गए अतिवादी लोग, और इस निंदा के नाम पर उसका सर कलम करने का नारे लगाने लगते हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, हमारा विश्वास है, और वो उस विश्वास के ऊपर अगर कोई चोट पहुंचाएगा, निश्चित रूप से हमारी भावना उससे चोटिल होगी और हमारे मन को दुख होगा। तो मैं चाहूँगा भारत सरकार से ये मेरी अपील होगी आपके माध्यम से कि यहाँ पर इस निंदा कानून बने, और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म
के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए। और मान्यवर इसके साथ ही धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। माननीय श्री मानस रंजन मंगराज, डिमांड टू डिक्लेयर लाइटनिंग एज ए नेचुरल डिजास्टर। Thank you, Deputy Chairman, sir. According to the Indian Meteorological Department, IMD, lightning strikes claim the lives of 2,500 people annually in India, causing burns, muscle spasms, multi-system dysfunction, cardiac arrest, and instant death. The majority of victims, 96% are from rural areas, including farmers, cattle grazers, fishermen, jungle hunters, and laborers working outdoors. Studies indicate that lightning strikes will increase by about 12% for every degree rise in global average air temperature. Sir, Odisha, as per the last annual lightning report, records the highest number of lightning strikes. Odisha is specifically vulnerable to frequent lightning strikes due to a complex combination of climatic factors such as cyclonic activities, pre-monsoon and monsoon periods, are prevalence of high convective energy in the atmosphere. Despite this, the state has successfully reduced lightning-related casualties from 207 in 1920 to 156 in 2021. Odisha declared lightning a state-specific disaster on 1st April 2015, providing rupees 4 lakhs ex gratia to the families of deceased. Recently, Odisha proposed to the Centre to declare lightning as a natural disaster, actively implementing mitigation measures. Following lightning-related deaths, the state government directed Forest and Agriculture departments to undertake large-scale palm tree plantations as a preventive measure. Sir, countries like Thailand and Bangladesh have successfully employed large-scale palm trees plantations in mitigate lightning deaths. Through you, sir, we urge the central government to declare lightning as a natural disaster. This declaration would enhance ex gratia support for affected families, offering much-needed relief to thousands of Indians annually. This urgent step must be taken to address the high mortality rate associated with lightning strikes. Thank you, sir. Thank you. Dr. M. Thambi Durai, demand for new railway line. Sir, thank Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to draw the attention of Railway Ministry to a new railway line project which is pending for implementation for a long time in Tamil Nadu. The pending railway line project is from Puducherry to Bangalore through Jolarpet, Krishnagiri and Hosur, which is connecting 2 states and 1 union territory via Tamil Nadu, Karnataka and Puducherry. Several thousand people every day suffer want of a direct line between Puducherry and Bangalore. An announcement about this new railway line was made, but it did not move forward now. Now it is learned that survey had been done and DPR had also been prepared. But so far, this project has not seen the light of the day. Sir, you know very well, Puducherry houses the world-famous Aurobindo Ashram, Jipmer, which are national importance apart from it being a tourist destination. Needless to say that Bangalore is one of the fastest-growing metro in India, contributing nearly 40% of India's total IT export. En route via Krishnagiri and Hosur, which are entirely industrial belt, and they host a lot of heavy industries, MSU, etc. Honorable Prime Minister also announced Hosur of the Krishnagiri as a defense corridor. It is, if the new line is established from Puducherry to Bangalore via Jolarpet, Krishnagiri and Hosur, it will not only help the competitors, but it will also generate a lot of revenue to the Railway Department. At least in the beginning, the project can be first initiated from Jolarpet via Krishnagiri and Hosur to connect Bangalore. That means very important. I request Honorable Finance Ministry,
through you, sir, to implement the project and help the Tamil Nadu people, Pondicherry, Puducherry, and Bangalore people. Thank you very much. Thank you, Thambi Durai ji. Mani Shri Rajmani Patel ji, concern over non-payment of adequate compensation for land acquisitions made by Indian Railways. माननीय सभापति महोदय, रेलवे से प्रभावित किसानों को न्याय देने के संबंध में तब देना चाहता हूं। रीवा सीधे सिंगरौली ललितपुर रेल लाइन का निर्माण करीब पूरा हो चुका है और जो रेलवे विभाग के द्वारा किसानों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट था कि जिन किसानों की ज़मीन ली गई है उनके परिवार के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। उसके संबंध में एक लंबे समय से वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को कुचला जा रहा है और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर केस और मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हजारों किसानों की ज़मीन रेलवे में ली गई है और इसी तरह से दूसरी योजनाओं में भी जो ज़मीन ली जाती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। जो विभागों के द्वारा करार होता है उस करार के आधार पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे वो किसानों के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी सभा महोदय, किसान अन्नदाता है, जब वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तभी लोगों का पेट भरता है और जिस अन्नदाता के लिए सरकार ये कहती है कि हम उनके हितों का संरक्षण करेंगे, आज वो किसान पीड़ित है, दुखी है और हमारे छोटे सीमांत किसान हैं जिनकी पूरी ज़मीन ले ली गई और उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से और मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि करार के आधार पर सभी प्रभावित किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए और जो उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस करना चाहिए ताकि अन्नदाता का विश्वास मजबूत हो और वो देश की सेवा कर सके। माननीय सभापति महोदय। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. Today I stand before you for raising a matter of serious concern. According to a recent information shared by our External Affairs Minister in other house, a staggering 403 Indian students have lost their lives in foreign countries since 2018. Sir, this is not a number. It represents families devastated, dreams shattered, and futures extinguished. As per the information provided by the minister, Canada topped the list with the 91 incidents, followed by the United Kingdom with 48 cases. In the United States alone, 4 Indian or Indian origin students lost their lives in the month of January this year. This number demands our immediate attention and collective efforts to ensure the safety of Indian students, those who are studying abroad. We must ask whether some of these cases, in fact, hate crimes is there. I urge the government to conduct thorough investigation into each case to determine if hate crimes are a contributing factor. It is essential to address the root causes of this rise in violence, fostering diplomatic ties with promote tolerance, inclusivity, and the protection of Indian students. We cannot ignore the pain of the families who have lost their loved ones. As a nation, we have a responsibility to protect our students, to give them the opportunity to learn and grow in a secure environment. The government must engage in robust diplomatic efforts with countries where our students are studying. Collaborative initiatives are crucial to establish and reinforce safety protocols. There is an urgent need for the establishment of a comprehensive records system to accurately track and report incidents involving Indian students overseas. A fast-track grievance mechanism is essential for the swift redressal of
concerns raised by students and their families. It is a time for us to come together as a nation, regardless of political affiliations, and address these pressing issues. Let us put aside our differences, sir, and work towards a common goal, the safety and well-being of our students. They are the future of our country, and their dreams should not be cut short due to avoidable tragedies. I urge the government to take immediate and decisive steps. Let us ensure that every Indian students are safe in their study period. Thank you, sir. Sri Jagesh. Thank you, sir. Sir, my demand to drop the proposal of construction of a bypass road at Turvekere town, Karnataka, and need to take the winding of existing road. The highway in Karnataka starting from Jevargi, connecting Maski, Sirgupa, Ballari, Cherilkere, Hiriyu, Turvekere, Sringapatna, Mysore and Chamarajanagar, which previously comprised of state highway, was recently upgraded and declared as a national highway, 150A, by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. The proposal of construction bypass road at Turvekere town, Karnataka on National Highway NH 150A from Jevargi to Chamarajanagar is under consideration by the Ministry of Transport and Highways. Acquisition of agricultural land by the ministry for the purpose is under consideration. Around 300 farmers will lose their fertile agricultural land for the construction of this proposed bypass to avoid just 1.5 kilometer, which is passing through Turvekere town. These farmers are completely dependent on agriculture for their livelihood, and they do not have any other sources of income. The farmers are agitating against the proposal, and there is a persistent demand from the people of this area to cancel the construction of the bypass and requesting the government for widening of the existing road passing through the town in the place of bypass. If the existing road passing through the town is widened, it will serve the purpose and there is no need for separate bypass because Turvekere is a panchayat town and taluk with less than 20,000 population in Tumkur district, Karnataka. Therefore, I sincerely urge the government to drop the proposal of bypass construction and take up the widening of the existing road at the earliest. Thank you, sir. Dr. Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to seek the inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. Ahimsa, or non-violence, has been one of the core values of India, which won its independence on its merits. When Indian freedom struggle and Mahatma Gandhi are remembered, the value and ideals of ahimsa reverberates in the minds and hearts of people across the world and is known as the true cherished gift of India to the world. Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji on May 2018, during the first meeting of the National Committee for 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi said, "I truly believe that the greatest tribute India could provide to Mahatma Gandhi is to include the uniquely Indian ideal of ahimsa, of non-violence, in the preamble of Indian Constitution." Similarly, Honorable Chairman, sir, Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji in December 2019 reiterated his demand for inclusion of the word ahimsa in the preamble while addressing the second meeting of the National Committee for Celebrations of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. He said, "Ahimsa is the most powerful message given by India to the world, and ahimsa has made our freedom struggle a unique freedom struggle in the entire world." Almost 3 years after he gave this call, on 23rd March 2021, the Odisha Vidhan Sabha passed a unanimous resolution asking for inclusion of ahimsa in the preamble of the Indian Constitution. Apart from this, Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji and Odisha Vidhan Sabha's resolution, ahimsa as a thought has always been a cherished ideal of our nation. On the occasion of 75 years of India's independence,
Shri Naveen Patnaik ji also flagged off the Ahimsa Rath, whose sole objective was to spread the Gandhian doctrine of Ahimsa across the cross-sections of people and commemorating Gandhiji's special relations with Odisha. Honorable Chairman, sir, Gandhiji always had a very emotional chord with the people of Odisha, and on 23rd March 1921, about 100 years before the Odisha Vidhan Sabha sat on 23rd March 2021, Gandhiji had visited Odisha. So the bonds of Gandhiji's ideals, the virtues of Gandhiji's principles, which are enunciated across the world, where Nelson Mandela, various other people like him, have attributed that if India has given something to the world, among many things, it has been the doctrine of Ahimsa, non-violence. It lies at the core of the virtues and the conscience of our nation. It lies at the basic philosophy of Vasudeva Kutumbakam and Sarva Dharma Sambhava. That's why, Honorable Chairman, sir, through you, I humbly request the government to look at this inclusion of Ahimsa in the preamble of the Indian Constitution, as requested by my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and the unanimous resolution of the Odisha Vidhan Sabha in 2021. Thank you. Shri Neeraj Dangi. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य का ये महत्वपूर्ण मामला शून्यकाल के तहत इस सदन में उठाने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। राज्य में हम रोजगार की बात करें, रोजगार को बढ़ाने की, या राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, इस दृष्टि में राज्य के चहुमुखी विकास और उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ उस तरह के आयाम उपलब्ध होने चाहिए। और राजस्थान राज्य में चाहे पर्यटन हो या खान या खनिज क्षेत्र हो, अपने आप में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतरीन संभावनाएं यहाँ उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय, राजस्थान के करौली जिले के अंदर खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है एवं करौली जिले के हिंडौन तहसील में ग्राम लिलोटी, ग्राम देद्रोली, ग्राम टोडूपुरा और ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज, लोह, आयरन और ब्लॉक का अथाह भंडार उपलब्ध है। यहाँ लोह, आयरन और खनिज का अगर खनन किया जाता है तो क्षेत्र के समग्र विकास में न सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लिए रोजगार प्राप्त करने में हमें एक नया आयाम स्थापित करने का अवसर मिलेगा। MMDR अधिनियम 1957 की धारा 10B(2) के अनुसार खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 16 के उप और नियम 1 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए तो समग्र लाइसेंस देने के लिए अधिसूचित खनिज की नीलामी के लिए खान मंत्रालय भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। खनिज ब्लॉक की नीलामी के पूर्वानुमोदन हेतु और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व में केंद्र को प्रस्ताव भेजे हैं। ऐसे में आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान के करौली जिले की तहसील हिंडौन में ग्राम लिलोटी, ग्राम देद्रोली, ग्राम टोडूपुरा और ग्राम खोरा के समीप पाए जाने वाले अधिसूचित खनिज, लोह, आयरन और ब्लॉक की नीलामी हेतु पूर्व अनुमोदन कर राजस्थान के धौलपुर और करौली क्षेत्र के जनता को अनुग्रहित करें और वहाँ के समग्र विकास हेतु यह अपनी पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिग्विजय सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जिन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया। लेकिन यदि आप देखेंगे कि चूंकि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिनकी वजह से प्रति सीट जो संख्या गरीब परिवारों की, अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है, वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जहां अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए 1950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं,
शेड्यूल ट्राइब में 1355 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए, ओबीसी 1225, लेकिन ईडब्ल्यूएस से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569। इसी तरह से जितने भी आप कैटेगरीज देखेंगे, इसमें आप चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हों, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज हों, इस तरह से हमारे युवतियों का भी यदि संख्या लेंगे प्रति सीट तो वो भी बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु में और उनकी जो दूसरी शर्तें उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु का रिलैक्सेशन छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों का 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों को ये रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें मेरी प्रार्थना है माननीय सदन के नेताजी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वे इसे इस सेक्शन के लिए भी अनारक्षित वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लगभग 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया, हरियाणा ने 5 साल कर दिया, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश ने 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसी प्रकार जो इनकम की जो लिमिट है उसमें कई जगह उन्होंने इनकम की लिमिट भी हटा दी है, उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान ने। इसलिए मेरी मांग है माननीय सभापति आपके माध्यम से कि इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्र छात्राओं को एज में और अन्य शर्तें जो हैं उनमें भी रिलैक्सेशन दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। महोदय, लोकतंत्र बिना पत्रकारिता के अधूरा है और मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी हूँ कि 1867 में बने काले कानून को समाप्त करके पत्रकारों के हित में नया कानून बनाया गया। महोदय, मैं एक विषय बताना चाहती हूँ। पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे में रिजर्वेशन में डिस्काउंट मिलता था, परंतु कोरोना काल के बाद से वह डिस्काउंट मिलना रुक गया है। महोदय, यह भी कहना चाहती हूँ कि पत्रकारों के निवास क्षेत्र अथवा कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले मंडल के सभी टोलों पर टोल टैक्स फ्री किया जाए और जो कोरोना काल से पहले उनको रिजर्वेशन में डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट दोबारा चालू कर दिया जाए। महोदय, बिना पत्रकारों के सही समाचार पत्रों का नहीं हो पाता तो वो भी दिक्कत की बात है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ पत्रकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये दोनों मांगों पर सरकार अपना ध्यान आकर्षण करे। धन्यवाद। श्री अनिल प्रसाद हेगड़े। Thank you, Chairman, for giving me the opportunity to speak on an important issue of the health and socio-economic impacts of GM crops on the Indian people. The BT gene GMO was introduced into hybrid cotton in India, the only country in the world to do so, as a value capture mechanism. Conservative estimates indicate that Indian farmers may have paid an additional amount of 14,000 crores for BT cotton seeds and trait fees between 2002 and 2018. The hybrid technology disallows seed saving by millions of small farmers. Yet the plan is to similarly use hybrids in other BT and herbicide-tolerant crops and also to commercialize HT GM hybrid DMH11 Indian mustard developed by Professor Dr. Deepak Pental. Hybrid-tolerant crops are pesticidal crops used to kill weeds, a serious health hazard, a failed, unsustainable technology worldwide. It has led to resistant superweeds and huge increases in pesticide use. HT hybrid DMH11 cannot dent India's oilseeds imports because it is out-yielded by non-GMO mustard hybrids and varieties. India imports illegal GMO canola
rape oil, which is not Indian mustard. The fact is that herbicide-tolerant hybrid mustard will contaminate in a few short years non-GMO Indian mustard and destroy Indian mustard farming. The socio-economic environmental impact of GM technology on India's farming, contamination of our non-GMO organic exports, health and food security are not assessed. These are questions of ethics. We should be listening not to scientists and large businesses, but to experts on social justice, human rights, animal welfare, and third world development. The very experts that are not consulted, the evidence against GMO is incontrovertible. GMOs will destroy Indian agriculture, which is non-GMO, and our export markets of thousands of crores. By the way, sir, this scientist who has developed this GMO DMH11 is a person against whom allegations of plagiarism and forgery and theft of seeds allegations were there, and he had to go to Tihar jail. Thank you, sir. Shri Kailash Soni. धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, डीप फेक गलत उपयोग के खतरों को रोकने के लिए हमारा विषय है भारत सरकार योजना बनाए और कानून बनाए। डीप फेक तकनीक ने व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से नए सवाल उत्पन्न किए हैं। यह तकनीक तस्वीरों और वीडियो को मूल रूप से संपादित करके ऐसा महसूस कराती है कि वे असली हैं, जिससे गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। हमें डीप फेक के गलत उपयोग और उसकी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। डीप फेक तकनीक का सबसे बड़ा खतरा धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपत्तियों का निर्माण करने में है। इसका गलत उपयोग हो सकता है, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और वे झूठी खबरों या छवियों पर विश्वास कर सकते हैं। डीप फेक का एक अन्य बड़ा खतरा व्यक्तिगत और सामाजिक कलंक का उत्पन्न होता है। इसका दुरुपयोग करके व्यक्तिगत छवियों और वीडियो को बदला जा सकता है, जिससे किसी की छवि को नुकसान हो सकता है। डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग ऑनलाइन यातायात में धोखाधड़ी के लिए भी हो सकता है। गलत तरीके से उपयोग करके किसी की आइडेंटिटी छिपाई जा सकती है और ऑनलाइन धोखाधड़ी भी की जा सकती है। डीप फेक को पहचानना और नियंत्रित करना तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तकनीकी शास्त्र में नवीन और बेहतर तकनीकों की आवश्यकता है ताकि डीप फेक का पता लगाया जा सके और उससे बचा जा सके। सरकारें, सामाजिक संगठन और तकनीकी कंपनियों को सामंजस्य बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लोगों को डीप फेक के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा और साक्षरता की आवश्यकता है। नीतियों की भूमिका महत्वपूर्ण है ताकि लोग डीप फेक के गलत उपयोग से बच सकें। योग्यता के लिए अच्छी तकनीकी शिक्षा और संचार की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस विषय पर जागरूकता के लिए तत्काल योजना तथा इसके गलत उपयोग के लिए कानून बनाए जाएं। धन्यवाद। श्री पवित्र मार्गरेटा। So I'll start with a 1,000-year-old mantra, that is Bhojan mantra of Sanatan Sanskriti, which says Om Brahmarpanam Brahmavir Brahmagnu Brahmana Hotam Brahme Vatena Gantabbam Brahmakarma Samadhina Om Sahano Bhavatu Om Sahano Bhunaktu Sahaviran Karvavahe Tejasvena Vadhitamastu Ma Vidvisavahe Om Shanti Shanti Shanti. It means आहार को ब्रह्मा का हिस्सा माना जाता है, भूख भी ब्रह्मा का हिस्सा है और आहार को शोध, पचान और ऊर्जा में परिणामित करने की प्रक्रिया भी ब्रह्मा है। हे परमेश्वर, शिक्षक छात्र मिलकर एक दूसरे का साथ दे, सहयोग करे और बिना द्वेष के पढ़ाई करे। भगवान से शांति की प्रार्थना है। महोदय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भोजन का सेवन भारत में एक महत्वपूर्ण संस्कार है।
यह एक प्राचीन दृष्टिकोण है जो ब्रह्म को पूर्ण ऊर्जा या पूर्ण वास्तविकता का स्रोत मानता है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में परिभाषित करता है। सनातन धर्म के उपदेश के अनुसार भोजन को प्रसाद के रूप में देखा जाता है, इसीलिए भोजन की बर्बादी धर्म का उल्लंघन है। हमारी भूमि पर नैतिक और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, उसी भूमि में अत्यधिक भोजन की बर्बादी एक गंभीर मुद्दा बनते जा रहे हैं। According to an estimate of UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति वर्ष 6.87 करोड़ टन भोजन या लगभग 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घरेलू भोजन की बर्बादी के मामले में यह ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, जो चिंताजनक है। भारत में हर साल भोजन पर लगभग 89,000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं। यह भारत के जीडीपी के लगभग 1% के बराबर है। It is a data of earlier survey, but it is little bit lesser now. न केवल भोजन की ही बर्बाद हो रहा है, बल्कि इसे बनाने में जो सभी संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की मेहनत भी बर्बाद हो रही है। हालांकि रिपोर्ट भारत में उच्च भोजन बर्बादी को दर्शाती है। कोई भी यह निर्धारित या नियंत्रित नहीं कर सकता है कि किसी को कितना खाना चाहिए या दूसरों की भोजन की आदतों में कोई दखल नहीं दे सकता है। लेकिन साथ ही मैं अनुरोध करता हूं, हमें निश्चित रूप से व्यवहारिक और नैतिक परिवर्तनों के लिए काम कर सकते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों में जिम्मेदार व्यवहार पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, इससे बच्चों को कम उम्र में ही भोजन के मूल्य के बारे में सीखने में मदद मिलेगी। उन्हें नैतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनने प्रोत्साहन प्राप्त होगे। यह हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के लक्ष्य के साथ मेल खाता है और इसका फॉलो करना इस समय की मूलभूत मांग है। धन्यवाद। श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपके माध्यम से मैं चंदौली जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में अपना विषय रखना चाहती हूँ। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार देश की सड़कों, उनकी स्थिति और रखरखाव को लेकर हमेशा सजग रही है और आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। सड़कें देश के विकास की रीढ़ साबित हो रही हैं। सभापति महोदय, देखा गया है कि यहाँ होने वाली ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं अप्रशिक्षित ड्राइवरों की गलतियों के कारण होती हैं, क्योंकि उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा पहल के रूप में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना कई राज्यों में की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कानपुर और रायबरेली में भी ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया गया है। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य महत्वपूर्ण मार्ग मेरे नोडल जिले चंदौली से होकर निकलते हैं, जो कई राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहती हूं कि एक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना जनपद चंदौली में भी किया जाए, जिससे वाहन चालकों को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। धन्यवाद। श्री